one of the spots where we saw the fight between the Trinamool Congress and the BJP over icons like Subhash Chandra Bose, Rabindranath Tagore in the last assembly elections. It may be a battle which she won, but she has always been dismissive of the 2019 Lok Sabha electoral results, which was a good performance by the BJP as a mere flash in the pan. Now, as we head for 2024, will the TMC face challenge over various charges against it, like the Bhaipo factor, poll violence, as well as charges of corruption? The BJP certainly wants to capitalize on this. Over the next half hour, I'm going to try and report as I move across the SAYS on the DD power, on the DD factor, and whether the BJP is able to outsmart her. As TMC celebrated their clean sweep in the Panchayat elections, amidst pictures of arson and violence, the BJP has found its plank for the 2024 polls. Political intimidation, lack of good governance, and a state government soaked in corruption. The BJP hopes to better its 2019 performance when it won 18 Lok Sabha seats. And who better than the giant slayer Shubhendu Adhikari, once closest to Mamata Banerjee, but who is now known as the man who defeated a sitting CM in Nandigram. Do you think you're going to give her a tough fight for 2024 Lok Sabha elections, the BJP? You know, last Panchayat election 2018, 34% seat uncontested by the TMC. And huge incident happened on the date of poll and date of counting also. After that 2019, BJP got 18 seats. Today, what is happening in Bengal, 2024, people will react when they will go in front of the EVM. The memories of 2007 firing when over a dozen farmers were killed during the left rule remains. It's this memory that Mamata Banerjee used as a bedrock to establish the Ma Mati Manu slogan for her party. Her stiff opposition to corporates made her political career. Nandigram and Shingur rewarded her with the crown. Even today, many of her supporters in Nandigram have not reconciled with her defeat from here in the last assembly elections, dismissing it as a rigged poll. 2007-এ আমরা তো এখানে আতঙ্কেই বসে আছি আর ওদিকে যাইনি। এবারে 2007-এ যে হয়েছে ওখান থেকে ঝালাপ মানে সবাই কানতে কানতে ছুটতে আসছে। আচ্ছা এই পর্যন্ত দেখেছি এই দিক দিয়ে আসতেছি। আচ্ছা এই মাঠ দিয়ে আর আমরা এখানে চুপচাপ বসে আছি সবাই পালাচ্ছে মানে বাইক নিয়ে সবাই ছুটছে ওইদিকে। হ্যাঁ সেই গুলির আওয়াজ এখনো পর্যন্ত আসে কানে ঠেকে মানে আর বলবার কিছু নেই আর কি। তখন তারপরেই তো দিদির পার্টিটা শুরু হলো তৃণমূল কংগ্রেস মা মাটি মানুষ তো কিন্তু ওনার এটা বক্তব্য ছিল যে আমি কোনো ফ্যাক্টরি চাই না কিছু চাই না। এখন আপনার মনে হয় ঠিক ছিল ফ্যাক্টরি হওয়া উচিত না? ফ্যাক্টরি হলে আরো মরতাম না। এখন আমরা আছি এই ভ্যালুই আছে। তো চাকরিও তো পাবে না? চাকরি আমরা পাবো না, বাইরের লোকই পাবে। কেন পাবো না? বাচ্চারা পাবে। বাচ্চারা আমাদের বাচ্চা সেরকম বড় নেই, ছোট বাচ্চা। বাইরের লোক মানে বাইরের লোক পাবে। ওই আপনারও তাই মনে হয় কি? ওই বাইরের লোকই পাবে। সুরাট থেকে লোক আসবে কিন্তু মানে এখানে মুখ্য সুরক্ষা মানুষ আমাদেরকে নিবে। আর দিদি তো হেরে গেল। দিদিকে তো ইচ্ছে করে হারানো হয়েছে ইচ্ছে করে লোক শুটিং করে।
লোকসেটি লোডশেডিংয়ের সময় বাক্স সেটি দিয়েছে, বাস জিতে গেছি। তো আপনার মনে হয় 2024-এ দিদি জিতবে? 2024-এ? হ্যাঁ। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তো। আর এইবারে দেখুন না, না, পঞ্চায়েতের কথা আমি বলছি না, আমি কথা বলছি লোকসভা ইলেকশনের কথা। 24-এ। হ্যাঁ, তো এখানকার লোকদের কোনো ওই ব্যাপার নেই, কোনো এতে দুঃখ নেই বা কষ্ট নেই যে এখানে কোনো ফ্যাক্টরি খুলে নেই? না না, সিঙ্গুরেও না, নন্দীগ্রামেও না। But with the BJP focusing on the fact that Bengal is lagging in terms of industrial investment, Mamata is keen to catch up, especially with a crying need for jobs and more money. Hence, investor summits are being organized by her to ensure that Bengal is an attractive destination. The voices on the ground make this clear. As we drive down to Murshidabad, the Congress stronghold, but one where TMC is marching in, the people complain of lack of jobs. Search for jobs and getting to work is on a choppy board here at this small tea shop. They slowly open up to tell me that even in exchange for bribe and cash, they cannot get jobs. কি বলছো, 23-24 বছর ধরে কেউ রাস্তাই বানায়নি? আচ্ছা, আর আপনি যখন ওরা ভোট চাইতে আসে তখন আপনি এই প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেন না? তো ওরা কি বলে? হ্যাঁ, হবে। 23 বছর ধরে কবে? মানে যে ইলেকশনে যখন আসছে তখন বলছে হবে, ইলেকশন যখন পার হয়ে যাচ্ছে তখন বলছে না হবে না, হয় না। তারপরে ওরা খালি ইলেকশনের সময় প্রমিস করে তারপর চলে যায়। হ্যাঁ, তাছাড়া কি করবে? হ্যাঁ, দিদিও তো প্রমিস করে না। দিদিকে কোথায় পাবো? এখানে দিদির চেলারাই যায়, দিদিকে পাবো? আমাকে একটা জিনিস বলুন, আপনি তো নিশ্চয়ই খবর কাগজ পড়ছেন, আপনারা দেখছেন যে কত চেষ্টা হচ্ছে যে বিজেপির এগেনস্টে একটা অপোজিশনের জোট একটা হয়। আপনার মনে হয় এটা হতে পারে? আপনার মনে হয় যেরকম মমতা ব্যানার্জিকে যদি প্রাইম মিনিস্টার মতন প্রজেক্ট করা হয়, আমাদের বেঙ্গলের জন্য একটা গর্বর ব্যাপার হবে? সঠিক বলতে পারছি না, যেহেতু আমরা ভোটার, আমরা কোনো পার্টি রাজনীতি করি না, আর আমরা কি করে বলবো কি যে কি হবে না হবে? আপনারা রাজনীতি করেন না, সেটা ভালো ব্যাপার, কিন্তু আপনারা চায় যে নেতারাও আপনাদের জন্য কাজ করুক। হ্যাঁ, সেটা তো চাইবে, সবাই চাইবে যে কাজ হোক, কাজ করুক, এটা চাইবে। একটা কোনো ফ্রাস্ট্রেশন হয় যে আমরা এত বছর হয়ে গেল, 23 বছর 24 বছর যেন উনি বলছেন, কিন্তু কোনো কাজ হয়নি, আর ওরা খালি প্রমিস করে আর চলে যায়? যদি আপনার প্রয়োজন হয় আমি গিয়ে আপনাকে রাস্তা দেখিয়ে দেবো। আচ্ছা, গাড়িতে প্রমাণ পাবেন, দেখেন কতটা কাদা বেরিয়ে এসেছি আমরা। কোথায়? ওই দেখেন এই গাড়িতে কতটা কাদা লেগে গেছে আমার গাড়িতে। এখন পর্যন্ত রাস্তাঘাটের কোনো নাম নেই। আসছে মেশিন, মানে ভোটের আগে আসছে মেশিনপত্র সব নিয়ে চলে আসছে, ইলেকশন পার হয়ে যাচ্ছে, বাসার কারোর পাত্তা পায় না। আর চাকরি? এটা তো ইয়াং লোক, এত লোক এখানে আসুন। হ্যাঁ, চাকরি চাই। চাকরি তো চাই, চাকরি নিয়ে কোনো কথাই বলেন না। কেরম রকমের চাকরি চাই আপনারা? গভর্নমেন্ট চাকরি, প্রাইভেট হলে? প্রাইভেটের তো আছে, কিন্তু নেই তো চাকরি নেই। চাকরি বাজারের অবস্থা এমন হয়ে গেছে, এখন টাকা ছাড়া যেন চাকরি নেই, টাকা দিয়েও চাকরি হচ্ছে না, কত বেকার পড়ে আছে। আমরা তো কোনো পার্টি পলিটিক্স কিছু করি না। As the Congress focuses on joblessness under the Modi government at the centre, here too the pitch, ironically, against the TMC is the same for both the Congress and the BJP. You're not in favour of an alliance with the TMC? It's not the question of any favour or disfavour, because again I am saying you that it is a larger question. I am simply confining myself in the local body elections which is going to be held in West Bengal. But in the larger context, our higher-ups are there who are competent enough to take care of us. But is it possible to defeat Mamata Banerjee in West Bengal assembly elections? I have already defeated Mamata Banerjee in the bypoll here. Mamata Banerjee is not an invincible political personality in Bengal. She could be vanquished also. Here we have proved it substantially. And in the next election, if it is so, we will be trying our best to substantiate the fact again that Mamata Banerjee is not an invincible
political personality. Murshidabad has an air of rebellion about it. Sirajuddaula, the Nawab of Bengal, had taken up a fight against the Britishers but had largely got defeated also because of the palace intrigues. It's right over here where the Trinamool Congress is facing an aggressive campaign from the Congress party. The more the Congress rises in this area, the more the TMC feels the heat. And therefore, as we head for the Lok Sabha elections of 2024, the entire talk of an opposition unity somehow may compromised because of the Congress also wanting to hold its stand over here. The Congress party feels that the Trinamool Congress cannot be a trustworthy ally. The reason also is the recent by-poll results where the Saga Digi by-poll was won by the Congress, but the one who won went and joined the Trinamool Congress. Congress condemned it as a breach of the unity talks. It's also an election in which the Trinamool Congress faces heat from the BJP. If the BJP is able to outsmart itself and the results of the last Lok Sabha elections, it may be able to take some sweet revenge on the defeat they suffered in the assembly elections. And therefore, in the next couple of days and weeks and the run-up to the 2024 Lok Sabha elections, you're going to be seeing a bitter fight, not just between the TMC and the BJP, but also Congress versus the BJP and also Congress versus the Trinamool Congress. Will it be having a dent on the DD factor in what has traditionally been the stronghold of the Congress party? In the next segment, we shall discuss the corruption charges against Mamata Banerjee and her nephew Abhishek Banerjee and the arrest of her key aides. Will it hurt her in 2024 and give her edge to the BJP? Political violence is not the only issue that the BJP is latching on to corner the Mamata Banerjee government. Corruption is a talking point in Bengal politics. Mamata Banerjee came to power by projecting herself as a simple, no-frills attached leader. Her trademark cotton sari, her white chappals, and insistence on living in a house on Harish Chatterjee Street rather than in his sprawling CM residence. She is still seen travelling often in a small car minus a lal batti. Now, those who live near Kolkata's Kali Ghat, near Mamata's house, typically swear by her. But some discordant notes are also heard. 2024 के चुनाव की बात करते हैं क्योंकि वहाँ पे बीजेपी भी कोशिश करेगी. पिछले बार लोकसभा में उन्होंने पिछले बार अच्छा सीट उन्होंने जीते थे, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इस बार असेंबली चुनाव में हालांकि वो हार गए. क्या आपको लगता है जो वो लोग पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन ये सब बात करते हैं उसका कोई असर पड़े? कुछ नहीं होगा. वेस्ट बंगाल में टीएमसी को हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है. जितना काम किया टीएमसी, ये जो 34 साल सीपीएम किया, कुछ नहीं किया. क्या किया? अपने आप लूट के लिए. लूटने के सब जो आता है सभी करता है, लेकिन ये टीएमसी किया है काम. ग्राम में जाइए. तो आपके हिसाब से कौन कौन से एरिया में टीएमसी ने काम किया है? पूरा वेस्ट बंगाल में काम किया है. अब टाउन छोड़ दीजिए, विलेज में जाके देखिए, रास्ता घाट देखिए, स्कूल देखिए, क्या नहीं किया? सब किया. कौन सरकार पैसा दिया है गरीब लोग को? आज तक कोई सरकार दिया है 500 रुपया करके लक्ष्मी भंडार? नहीं दिया. कोशिश तो कर रहा है. सेंट्रल पैसा भी नहीं भेज रहा है. कहीं नहीं भेज रहा है. यहाँ पे कुछ असर नहीं पड़ने वाला है. अभिषेक बैनर्जी को आप देखना चाहोगे 2024 में कि या दीदी को नहीं रिप्लेस किया जाता? दीदी आएगा. दीदी को ही देखना चाहता हूँ. अभिषेक बैनर्जी को नहीं, उनको वेट करना पड़ेगा. अभी वेट करना पड़ेगा. वो बच्चा है अभी तक. हाँ, आपका क्या कहना है? हाँ, सेम. अभिषेक बैनर्जी को वेट करना चाहिए. लेकिन ये जो बीजेपी कह रही है बार बार कि बहुत करप्शन हुआ है और इसीलिए एटलीस्ट स्टेट इलेक्शन का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का अलग होता है. उनका कहना ये है कि करप्शन के चक्कर में इस बार बीजेपी को मौका मिले. आपको लगता है करप्शन एक इशू है? करप्शन तो वो भी किया सेंट्रल में. अच्छा, सेंट्रल में नहीं किया. मोदी इनको भी पूछती हूँ. नहीं किया. अच्छा, इनको भी पूछते हैं. हाँ, बोलिए. करप्शन के चलते लोकसभा में सीट थोड़ा कम बेसी हो सकता है. हो सकता है तृणमूल कांग्रेस का. अच्छा, बस और कुछ नहीं. तो कम बेसी में ही तो फर्क पड़ जाता है. अच्छा, आप तो
इसी इलाके से हो, आपको क्या लगता है कि 2024 में क्या लोग चेंज देखना चाहेंगे या अलग इश्यूज पे वोट आता है? कुछ लोग का दिमाग में सोचना है तो जैसे बातचीत होता है सुनता है, कुछ इधर उधर होगा, चेंज होगा। और कांग्रेस और लेफ्ट कोशिश तो कर रहे हैं वो लोग उभरने का, आपको लगता है उनको कोई चांस है? कांग्रेस लेफ्ट को है चांस, आप मानते हैं यहाँ पे? आपको क्या लगता है 2024 में क्या क्या इश्यूज होंगे? इशू के बारे में तो हम कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जैसे आदमी हम लोग बातचीत सुनता है, लोगों का हाल जानता है कि क्या बोलता है, लेकिन जब सोचता है दिमाग में तो जैसा लगता है कुछ चेंज होगा। जैसे 24 में आप बोल रहा है, ये कह रहे हैं कि चेंज होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और सीट कमेगा यहाँ पे बीजेपी का। ऐसा क्यों? हाँ ऐसा ही हो, अरे यहाँ पे ट्रेंड ही ऐसा है। अब देखिएगा 26 में भी फिर तृणमूल आएगा, कोई चांस नहीं है 26 में भी, अगला 10 साल में भी कोई चांस नहीं है, अपोजिशन नहीं है तो। अच्छा वो आपने ऑपोजिशन का नाम लिया, सेंटर में कोशिश की जा रही है, सेंटर में बीजेपी को रहने दीजिए। नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ। दादा, सेंटर में कोशिश की जा रही है कि एक ऑपोजिशन को स्ट्रॉन्ग किया जाए, यानी कि सब ऑपोजिशन पार्टीज एक साथ आए, और दीदी भी ये कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है ऑपोजिशन पार्टीज को दीदी को प्रोजेक्ट करना चाहिए एज प्राइम मिनिस्टर, दीदी या दीदी एज चीफ मिनिस्टर चलेगी? नहीं, दीदी एक ही आदमी है दीदी जिसका बैकग्राउंड साफ है, और जो गया है 90% चोर है। नारोदा शारोदा स्कैम इतना नाम हुआ। दीदी का नाम में मत बोलिए, दीदी का कोई प्रूफ नहीं है, एक तो प्रूफ दिखाइए दीदी का अगेंस्ट में, कोई नहीं है। जो चोर लोग वहाँ मिला है, लालू प्रसाद यादव, स्कैम देखिए उसका, सब तो चोर एक साथ मिला हुआ है, दीदी छोड़ के। लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा मोदी को, मोदी सेंट्रल में ही रहेगा, यहाँ पे वेस्ट बंगाल तृणमूल रहेगा। I guess it can happen only in Bengal, where we are all sitting together, but each one is entitled to a difference of opinion. And as Dada is saying, Didi ko state level pe and center pe Modi ko rehne. Well, we are going to see the permutation combination, but that's going to be in essence on the Didi power in West Bengal. But as pictures and stories of corruption came close to her door, the BJP and even Congress are targeting Mamata Banerjee. Anubrata Mondal, the Lord of Birbhum, who ensured at least 7 Lok Sabha seats around this area, was arrested in a cattle smuggling case. Partha Chatterjee, a former TMC minister who was also close to Mamata Banerjee, was arrested in a recruitment scam. If they think that this is the way, they will put their investigative agencies and all their might to scare me, to put me on the back foot, to make sure that I stay away from the political fray and doesn't question them on their wrongdoings. They're living in fool's paradise. And now the taint is hitting closer home. Her nephew and heir apparent Abhishek Banerjee, who calls the shots in TMC, hasn't escaped corruption charges either. The emergence of the nephew of Mamata Banerjee as a rival power centre has upset a large number of people within the Trinamool Congress who feel that a setback in the Lok Sabha will probably act as a corrective in the future, because the stakes in terms of the future of the state government in the Lok Sabha is non-existent. So they would rather that their dissatisfaction, their unease with the changing equations in the Trinamool Congress will be reflected in the Lok Sabha elections. I think what's very interesting about the nature of corruption which has come out, which has emerged so far, is that it touches every level of the Trinamool Congress. It's not something which is confined to the very top, neither is it something which is confined to the very bottom, and it's something which goes on despite the disapproval of the top. What we are seeing is a chain of command which exists right from the top, stretches into every single right up to the block level. And this sort of system which has been built, whereby a patronage system built solely on corruption, which is really dragging West Bengal down to such an extent that it's really fallen off the map of development as far as the rest of India is concerned. But the TMC has countered BJP's allegations by accusing the BJP of acting like a washing machine. Those who join the party automatically get cases against them dropped. The biggest mistake that BJP is making is to think that, coming from Bollywood, I know there is a famous song, "Ye public hai, ye sab janti hai."
So I think that they are just underestimating the fact that public जो है, they can fool the public by talking about भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई and all of that. What we saw in Maharashtra 2-3 days back, and the general pattern of of keeping the doors open for all the corrupt leaders to come and get into the washing machine of BJP, and then have the central agencies lose all their credibility by getting behind the opposition's leaders, trying to prove them corrupt. I mean, what credibility, what corruption, what is now Modi ji is going to talk about? You tell me. 3 days back he calls NCP the nationally corrupt party. सबको जेल के चक्की पीसना पड़ेगा. Those are the actual quote unquote dialogues. And the next day you find, as a Mumbaikar, I know what are the charges, grave charges against one of the biggest men who have joined the government now and holding high posts. So that's what it is. I think that they have made public the biggest opposition of the ruling dispensation. BJP is also tagging Mamata Banerjee as an erratic, eccentric and bad administrator. Her frequent run-ins with the centre and governor, taunts at the PM and refusal to attend Niti Aayog meetings all suit the BJP's agenda. The Raj Bhavan behind me has often been the pitch of a political battle between Mamata Banerjee government and the governor, and jumping into the fray has been the BJP. While she has accused the governor of being misused by the BJP at the centre, the BJP says that she has scant regard for constitutional framework. But whatever may be the reason, the presence of Jagdeep Dhankar, the former governor, as a vice president and chairperson of Rajya Sabha could make things difficult for the Trinamool Congress at the centre. But will it have an impact on her national ambitions? And will this tug of war between the BJP, the Raj Bhavan and the Trinamool Congress also have an impact on the image of Mamata Banerjee, or Didi as she is called, her star power and also her power to fight on the streets of Bengal? As we travel through many parts of Bengal, it's clear that neither the left nor the TMC have been able to keep pace with young Bengalis. Many youths have left the state in search for jobs. There are frequent street fights and violent protests. There's a government riddled with corruption allegations. And a sunrise in the form of Abhishek Banerjee faces the challenge of addressing the aspirations of an ambitious Bengal. As the sun sets on yet another day, the BJP wants to be the hope in 2024. But being the firebrand leader that she is, Mamata Banerjee will fight back. As we end this journey through Bengal and many parts of it through which we travelled, one thought which crosses our mind is that over the last couple of years, this beautiful state has remembered more for its poll violence, the kind of aggression which we see on the ground, and many of the aspirations which have not yet been fulfilled. As we head for the big elections for 2024, will Bengal bring that change? Will our politicians only get caught up and trapped in the promises that they have been making? And will the people of the state finally take a call on their future? Thank you so much for watching.